तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास तनाव है, और जिसके पास तनाव है उसकी जिंदगी में सुख और शांति नहीं हो सकती। वो तनाव इस बात का हो, मतलब दुनिया से जुड़ी जो भी बात हो, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब उन तकलीफों को भोगते हैं, जीते हैं। तनाव किसी भी वजह से हो, वो आपके शरीर को रोगी बनाता है। किसी भी वजह से हो, वो शरीर को पीड़ा देता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हार्मोन्स और आपके इमोशंस का, भावनाओं का बहुत गहरा रिश्ता है। जब आपके मन में क्रोध उठता है, तब आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्राव, सिक्रीशन ज़्यादा होने लग जाता है। और जब आपके मन में तनाव नहीं होता है, तो फिर एक दूसरा हार्मोन जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, फिर वो रिलीज होने लग जाता है। सो इफ यू आर इन स्ट्रेस, देन cortisol. If your mind is calm and stress free, then there is lot of serotonin. Serotonin, melatonin are the one which will give you calmness, and actually these are the ones which give you good sleep also. जिस दिन किसी बात की भी चिंता होती है, उस दिन आप ठीक से सो नहीं पाते, और चाहे फिर जप कर लो तो नींद नहीं आती, कुछ और कर लो तो नींद नहीं आती। और जितनी चिंता ज़्यादा करते जाते हैं उतना कॉर्टिसोल और बढ़ता जा रहा है। और लंबे अरसे तक जब कॉर्टिसोल आपके शरीर में अधिक रहता है, तो वो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को, सूजन किसकी? आपकी नाड़ियों की, आर्टरीज की, वेन्स की, दिल की। हार्ट क्या है? मसल्स हैं सिर्फ। और जब उन्हीं मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो हृदय रोग हो जाएंगे। आर्टरीज या वेन्स में इन्फ्लेमेशन आ गई तो आपकी ये रप्चर होने शुरू हो जाती, क्योंकि चिंता करेंगे तो बीपी भी हाई होगा। बीपी हाई का मतलब कि ब्लड प्रेशर का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे पानी का पाइप हो और उसमें बहुत ज़्यादा वेग से अगर पानी हम पास करें, निकालना चाहेंगे तो पाइप फट जाता है। ऐसे ही जब रक्त का प्रवाह, ब्लड प्रेशर जब बहुत तेज़ी से चलता है शरीर में, तो वो आपकी नसों को फाड़ देता है। अब वो दिमाग में फट गई, ब्रेन हेमरेज, लीवर के तरफ फट गई तो लीवर के बड़े तकलीफ आ जाएगी। वो हेमरेज पैनक्रियास में, किडनीज में, कहीं पर भी हो सकती, जिसे आम बोली में नस फट गई बोल देते। सवाल उठता है, नस फटी क्यों? चिंता से आया कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से आई इन्फ्लेमेशन, और कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा, और ये फिर यू आर फिट फॉर स्ट्रोक टू हैपन एनी टाइम। हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, रीजन इज वन। वेरी बिग रीजन इज योर स्ट्रेस, and number 2 reason is your diet, and number 3 is your bad sleeping and eating hours, and nobody pays attention on this. कभी भी खा लो, कुछ भी खा लो, कभी भी जाग लो, देर तक काम करो, ठीक टाइम पे सो नहीं, और चिंता करते रहो, कभी इस बात के लिए, कभी उस बात के लिए।
तनाव मन में रखते हुए लोग जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पर तनाव अपनी जगह पे. Just by visiting a holy place, your stress isn't going to go away. It might get shielded for some time because you got distracted. Now you are watching and seeing something else which is beautiful, nice, and your mind has been conditioned to believe that it is the most pious place. So mind creates this thought that, okay, now I will be safe. Devi will save me, Ramji will save me, God will save me, Babaji will save me, whatever names, those will be different. But it's a big consolation to go. But just by going to a temple, stress still doesn't go away, it is still right there. Right? अब तनाव अगर हम रखते हैं तो उससे शरीर रोगी होता है, और जब शरीर रोगी होता है तो दवाओं के खर्च बढ़ते हैं, और अगर कहीं हैमरेज हो गया तो सीरियस उसके नतीजे, रिपरकशंस विल बी वेरी बैड. Like if the stroke has happened in brain, the chances are almost 80 to 90% chances are that the paralysis will also come then. Stroke of heart happening, it damages the heart organ, meaning makes it more weaker. The lower ventricle gets damaged, upper, any place, because you never know what will be the bad result. Whenever the stroke comes, first they want to save the life, but then they'll say, we will see after 48 hours, then they'll say, we'll see after 72 hours. Once the person is conscious, then we will see what is okay and what is not okay. पर सवाल उठता है कि इस स्टेज तक हम अपने आप को पहुंचाएं ही क्यों? हम क्यों नहीं ऐसा तरीका कुछ सीखें जिससे हम अपने आप को तनाव मुक्त कर सकें? ये बहुत जरूरी. People will buy medicines for their blood pressure, for their diabetes, for sleep, for constipation, for anxiety, but they will not take care of the basic root reason, and that is their stress. And they don't know what to do about that. अब गोलियां खा लेने से टेम्परेरी नींद आ जाएगी, डायबिटीज थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक दवा लेने से दवाओं का असर होना भी बंद हो जाता है. फिर दवाएं और बढ़ानी पड़ती हैं, और फिर एक टाइम आता है जब दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं. तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, leave this obsessive and possessive behavior towards world. ये जो जिद तुम लोगों ने बना के रखी होती है, मेरी मर्जी से सब हो और ये सब हो, बस ये मर्जी छोड़ दो. तुम कहोगे कैसे? बस ऐसे ही सुनी और छोड़ दी. See, like if you use a napkin to clean your nose or mouth, do you have to think a lot before throwing this napkin in the dustbin? Do you go for a workshop to learn how to throw your dirty napkin? You use and you throw. Simple. I hope none of these ladies who are carrying these big purses have a load of soiled napkins in their purses, or men having those, dirty napkins in their pant pockets and coat pockets. You have big coats and big pockets. Oh, why throw it? Oh, I love my napkin. And it's my fluids. किसी और का थोड़ी, मेरा ही है, हाय मैं कैसे छोड़ दूं?
नाक पोंछा, जेब में रख दिया, कान साफ किया, नाक रख दिया, मुंह पोंछा, नैपकिन जेब में रख लिया। और ऐसे अगर कोई करने लग जाए तो सही में पागल लगेगा कि नहीं? गंदगी को हम फेंक देते हैं। We just throw our used dirty napkins, we don't hold it with us. Similarly, bad emotions are like used bad napkins, don't hold it, just leave it, throw it away. किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ नहीं मिला, कहीं हार गए, कहीं फेल हो गए, हाय मैं फेल ना हो जाऊं, हाय मैं फेल ना हो जाऊं। फेल ना हो जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? पर उसमें ईगो बैठी होती है कि मैं कोई बेवकूफ हूं कि मैं फेल हो जाऊं, मैं नालायक हूं कि मैं फेल हो जाऊं। नहीं, जो पास हो गए हैं उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए? कितने लोग हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पास हो जाते हैं? सिवाय ईगो बूस्टिंग के और कुछ भी नहीं होता। You will be surprised. In India, I conducted 2 workshops for doctors. One in Haryana, one in Punjab. And 120, 140 doctors in each session were there. They registered to be, and the whole thing was done about the stress. And before they enrolled themselves, they were asked to fill up a form. And yes, it will be confidentially kept, not shared. So I wanted to know about their blood pressure. All of them had high blood pressure. Most of them could not sleep. Some of them had diabetes. And they were in not a good state at all. So don't think that the doctor who is prescribing you medicine for your BP doesn't has a BP. Even he has BP or she has a BP. Because they don't know what to do about that. Their medical knowledge doesn't give them any idea what to do about their mind or what to do about their body or what to do for the body to keep it healthy, or the mind to be kept healthy. For sake of these so-called very educated doctors and engineers, and also just being intrigued, I got Yog Nidra clinical trial done in Indian Council of Medical Research, Hyderabad. It was a 6-month period clinical trial done, and all the subjects were not related. They had no idea that it's my voice which they'll be listening every day, and all the parameters were followed which are supposedly to be done, to be called a clinical trial. So blind placebo and 6 months, and we had some 75 plus subjects, all having high blood pressure. So they would come to the institute, they will do Yog Nidra, go back, come again. So every day they are coming to the institute, and every 3rd day or 4th day or 5th day, randomly they would check their blood pressure, and they had taken all the history, and they had included insulin, glucose, CRP, and all these various levels of TSH also. By 1 month, the BP, which was 145 by 95, came down to 80 by 120, and in some cases 80 by 115. And then some of the doctors in the institute enrolled themselves into it because they too had blood pressure. And now this trial went so well that the director of this institute felt
The urgency and need to put this into their journal, which usually the norm is they would take 4 to 5 years for any research to be published in the journal. But Yoga Nidra research came out in just a year, less than a year. It's already there.